प्रतीक, आप दिव्येंदु के साथ अभी पिछले प्रोजेक्ट में थे जहां पे फैंस ने बहुत मस्ती करते देखा. हाउ डज दैट camaraderie bring in more, you know, kind of thing? Was it fun on this one as well, or was it different? Such bold. Yeah, it was too much fun. In fact, we shot this film first. अच्छा. Yeah. And इसकी दोस्ती शायद उसमें ज़्यादा दिखी है हमारी. Okay. और इसमें हमारा जो बैंटर है, हमारी जो दोस्ती और दुश्मनी साथ में दिखती है, that's more fun in this film. So, if you could just share one good thing about working with him. That's difficult. So let's have one bad thing. That's also difficult because that's a list. But working with Divyendu is very difficult because it's difficult to concentrate when he's around. एक तो आपको कोई देखता नहीं है when he's around. He's talking about my looks. Yeah. Clearly. No. So Divyendu will return the favor. One thing you don't like about him. There's hardly something. नहीं, चलो रहने देता हूँ उसको. हाँ, ऐसा कुछ है नहीं यार. Actually, Pratik is a great guy and सीख रहा है. You know, so every day he's learning. I like that he has no ego. कभी भी शॉट के बीच में if he has any problem, he comes to me and say, दिव्येंदु मुझे सीन नहीं हो पा रहा, कैसे करना है. So that's what I really like about him. He's a really humble guy. So yeah, keep it up, Pratik. I think that's a great thing. See, this is how we have worked. Which is fantastic. You know, you've created another iconic character on Prime, and of course with the same team. When you do a character in Agni, which is more, real life, how does that, and your fans when they look at it, what can they expect first from this character, and second, where does this character fit in your body of work as well? For me, it's quite a different part to play. When we talk about Munna, that's a completely different world and character. But doing Agni was also, I mean, I really liked it as an artist, but also it was a responsibility that whatever we are doing, we have to do it with, with all our heart and, just do it right. I mean, so it's one of those films where, honestly, I mean, my character, yes, I really thoroughly enjoyed it, but, to be part of that world was even more important for me. So I just wanted to be part of this film, to just represent what firefighters go through. Although I represent the police, but that's the whole banter in the film as well. But again, for me, it was more important to be part of this world. Yeah. Fantastic. So, thoughts? You want? ठीक क्या? गुरुजी हैं, अब गुरुजी के बारे में क्या बोले हम. But what he said, that he is playing super cop in the film. And that also brings a lot of conflict in my character and in the world of firefighters. The kind of conflicts that these two characters are having, these two different worlds are having, their point of view about the same incident is different because of their background, because of their training and everything. And that makes it even more interesting and intriguing. So, film में भी वही है, and that's more fun. That makes it enjoyable for the viewers. And हमारा पूरा बैंटर जो फिल्म में चल भी रहा है वो भी वैसा ही है. So I guess it'll add up to it. सही जो है वो आप दोनों के बीच में बैठी हुई हैं. मैं आपसे पूछना चाहूँगा, you worked with so many people. You got a great body of work as well. How was it working with these two and of course the entire cast? If you could share. I think I'm very fortunate to be a part of such amazing group of people, talented people. And जैसा कि आपने बोला, हम बीच में बैठी हूँ. मेरा अक्सर फिल्म में भी सैंडविच हो रखा है. I play his sister and his wife. So I think for somebody who goes out and works and has a risky job like this, it is very important for them to have a very peaceful, delightful environment at home. So I think I play that part. I'm handling the domestic side. And मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अग्नि का फूल हूँ. So I'm very happy to be a pool of Agni. Wow. That's a nice title you created for yourself. Sayami, I'd like to ask you, you play a firefighter. How did you prepare for the role, and what was the most rewarding thing when you played your character? Firstly, good afternoon to everyone here, and thank you to the whole fire department for what they've done for our film. There's just something about the uniform, like just look at them. Yeah. Oh, yeah.
So I think the first memory I have is of Farhan with Laksh. Always this thing of there's something about a person in the uniform. So when I heard about the script and I sat with Rahul, it was just very exciting, the whole process of becoming a firefighter, I feel. And even when the teaser came out, there were so many comments which said, अरे ये फिल्मी मत बनाओ, female firefighter होते नहीं है. So our lack of knowledge that the department has so many female firefighters, and I have to say that I was very unaware with a lot of things that the fire department did as well. So I think this film has been a big learning. It's been great fun, as you can see the banter. And this is my second with Amazon, first with Excel, so it always will be special. First, second, thirds, they're all very special. जितेंद्र भाई, आप काफी सीरियस लग रहे हैं. सॉरी, मैं कह रहा हूँ जितेंद्र भाई, आप काफी सीरियस लग रहे हैं. तो नहीं यार, सोच रहा हूँ मतलब. मैं तो सर ये पूछ रहा था, कैसा रहा आपको इन सब के साथ काम करके? सीजन एक्टर है सर, देखो. बहुत ही मज़ा आया, लेकिन उससे परे जाके मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें बचपन से कुछ कहानियाँ सुनाई जाती हैं, है ना. तो विक्रम वेताल की कहानियाँ सुनाई जाती है, शूरता वीरता की कहानियाँ सुनाई जाती हैं. अगर छोटे बच्चों को कुछ काम निकलवाना होता है तो माँ बाप कहते हैं कि देख ले, शोर मत कर वरना पुलिस वाला आ जाएगा. कभी आज तक ये फिल्म मिलने से पहले तक, मतलब ये फिल्म जब मिली और मैंने इसको पढ़ा तो मुझे शर्म महसूस हुई इस चीज़ की कि बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी मेरे माँ बाप ने, कभी मेरे घर वालों ने किसी फायर फाइटर की कहानी ही नहीं बताई थी. और ये कहानी जब मैंने पढ़ी और जब ये किरदार पढ़े तो ऑफ कोर्स एक्सेल प्रोड्यूस कर रही है ये फिल्म, राहुल ढोलकिया जैसे निर्देशक इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और ये सारी कास्ट है. तो एज एन एक्टर आपको ये मौका लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है यार, इसमें काम करूँगा ना तो बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा. इससे परे जाकर जब हम लोग वर्कशॉप के लिए गए ना, और जब वर्कशॉप करते करते जब इनके अनुभव सुने, एक्सपीरियंसेस सुने, उसके बाद ऐसा लगा कि यार ये करियर से परे, ये सिनेमा से परे, ये कहानी बहुत ज़रूरी है. जैसे कि मेरी बच्ची को, आने वाली पीढ़ी को ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग बहुत अहमियत रखते हैं. और फिर एक चीज़ मन में आई कि एक ही चीज़ हो, ये फिल्म देखने के बाद, जैसे हम लोग आर्मी का कोई जवान दिख जाता है या पुलिस वाला दिखता है तो हम लोग सलाम करते हैं, तो ये फिल्म देखने के बाद हर फायर फाइटर अगर दिख जाए रास्ते में तो उसको एक सैल्यूट करना चाहिए. इतनी सोचो, ये दिल में ख्याल आया. और फिर काम करते हुए तो बहुत अच्छी टीम थी. तो जब एक्टर्स सभी अच्छे हों, डायरेक्टर अच्छे हों, और मैं और एक चीज़ स्टेज से कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने जितना काम किया है, मैंने कभी किसी सेट पे जूनियर्स के लिए इस तरीके का इंतज़ाम नहीं देखा. जो एक्सेल के सेट पे जूनियर्स जहाँ पे बैठे हुए होते, वहाँ पे एनाकोंडा होता है, तो मैंने नहीं देखा आज तक. एनाकोंडा एसी इसको बोलते हाँ, हैं. एसी. जस्ट टू हाँ मतलब हाँ. आई थॉट इट माइट साउंड वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग. मैं कहने का मतलब ये है कि सांप. कल सुबह अभी आधे घंटे में न्यूज में आ जाएगा, एक्सेल वालों ने जूनियर में छोड़ा एनाकोंडा. बट एनीवे, कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. इसका जो क्रेडिट सिर्फ हम नहीं ले सकते. यहाँ पे जो बैठे हैं कासिम और शिवानी, विकी, जो ऑन ग्राउंड, इन लोग सब बहुत मेहनत करते हैं. जी, सारी की सारी टीम. तो अब ये फिल्म बहुत अच्छी बनी और ये वो सक्सेस और फेलियर के परे वाली जाने वाली कुछ कहानियाँ होती हैं ना कि जो रह जाती हैं, कहनी चाहिए. तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राहुल ढोलकिया और एक्सेल का कि आपने ये कहानी कही और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उसका एक हिस्सा हूँ. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू. उदित, अभी जितेंद्र जी बात कर रहे थे वर्कशॉप की. मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाउ हैज़ इट बीन वर्किंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द रोल, एंड हाउ डिड एज एन एक्टर यू अप्रोच्ड टुवर्ड्स द इमोशनल सीन्स एंड एवरीथिंग? Yeah, I think any project that you do as an artist, it's fictionalized and whatever, and you are going, it has its dynamics and everything. But this kind of project is special because as an artist, you get to learn a lot. Like,
you don't pay attention to a lot of things when you're going about in your life, right? But these kind of projects lets you to see that you haven't seen before. Like I didn't know about anything. Like Jitu Bhai said, I also felt ashamed. Like when the first time I experienced everything, I thought, shit, I don't know anything about them. So, like the kind of life that they live. The first time I asked myself this question that, will I leave everything right now if I've been called for duty? And the answer was no. And then the question came, why? Why would you do that? So to just imagine that sacrifice that they make, putting someone else's life above theirs. So I think it's a very, very learning experience, and I'm very glad that I'm part of this movie. It's a very, very important movie. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.